naturally. But I don't want to treat myself. Don't treat, accompany a patient. What law says, I'll tell you, I'll explain you the law. Law says due care must be given. The single word, try to understand the meaning of law. Law says you are not a god. Medical mishap can happen. You are negligent if due care has not been given at that particular time, means the action which other doctor would have taken or omission which other doctor have done. If you are, if at all even anaphylactic shock patient has got drug reaction and you have not restrained the patient or not accompanied, even in any emergency cases when you accompany patient to the government hospital, if you are not done, then you are negligent. If due care has been given, you are nowhere negligent. But you give best of care with the best of your knowledge. You will never be negligent. Even patient dies at whatever stage. My first word, remember, law is very good for the doctor if you know the law. What happened, I tell you, the pleader, the advocates, they are simple advocates. Their medical law knowledge is exactly like the knowledge of a surgeon or a gynec or other faculty after 10 years for reading ECG. कि 10 साल का गायनिक प्रैक्टिस के बाद, 10 साल का सर्जरी प्रैक्टिस के बाद मैं एक आधा ECG लाऊं, सर देखो ना क्या है, तो आपका नॉलेज कितना होगा? आपको सर्जरी में मैं कुछ भी पूछूं, you will be the master because you are trained for that. वही एडवोकेट का हालत है. एडवोकेट को 324 पूछो, 375 पूछो, 302 पूछो, because every day they are fighting that case. मेडिकल लॉ मालूम है क्या? आप समझ रहे हो ना? So they plead in a court for you. मेस नहीं करेंगे क्या? उनको हाइपोक्सिया क्या है, एस्फिक्सिया क्या है, ये मालूम है. पेशेंट मरता है हाइपोक्सिया से, ब्रेन डेथ से. पेशेंट का एस्फिक्सिया था, लॉ में तो लिख के आ गया ना एस्फिक्सिया. आप समझ रहे हो क्या बता रहा हूँ? चलो रिसेंट 2 केस बताता हूँ. लेटेस्ट 2 केस. Don't you think portable sonography machine is genuinely needed to the doctor? But it was pleaded by one of the advocate, and the advocate could not able to explain to the judge why it was needed, why it is mandatory. तो जज को जो समझाया वही तो समझेगा ना. अपोनेंट ने जो समझाया वही समझेगा ना. जज को ये समझ में आया कि सोनोग्राफी मशीन पोर्टेबल जरूरत नहीं है, उसने ऑर्डर पास कर दिया. क्या हुआ? 25% रेडियोलाइज के तो खाने के वांदे होते. जिनके पास पोर्टेबल सोनोग्राफी थी क्या करेंगे बेचारे, उनको एक ही जगह रखना. आप समझे मैं क्या बता रहा हूँ? साइलेंट ऑब्जर्वर का केस pleaded by again advocate. What happened to that case? As a multiple cases, the judgment which has gone against the doctor in a past is because of the pleading done by such a people. I go in a court, I know, I have seen a people. But if it is cited by medical legal consultant, I see that is the reason why it was compelled by my colleagues to surrender my registration of medicine. They said, sir, we don't want anyone, we want that you fight the case. And then again I thought कि भाई 2 साल 3 साल का प्रैक्टिस तो बंद कर दिया तो what? No, emotional attachment तो डिग्री से रहता है ना सर. So it has taken me almost a year and a half to decide which should I surrender or shouldn't I. But ultimately I decided because मेरा तो पूरा job law में है. No, but I know if properly being presented in a court of law, I'll give an example to this. In one gynae case, we were there. What happened in that case? Unmarried couple came to gynecologist. She has done the procedure, abortion. Girl filed a rape case against the boy. Boy got arrested, and the gynae got arrested because 201 wiping of evidence of a crime, that is evidence of crime, and 313 was put. Actually 313 apply नहीं होता consent का part. लेकिन they said कि girl's age was 15.5 years. They shown on a paper 15.5 years to convict the guy because anything below 16 years with consent is rape as per the law. So even it is a consented, it is rape. So 313 comes in a picture because she was minor. The consent was not valid consent. So 313 was applied, and again 312 naturally miscarriage without consent, and 201. And this was presented by one of the advocate. मतलब बेल दे दिया. आप बिलीव नहीं करेंगे, आर्ग्यूमेंट का स्टेज आ गया.
3-1 3 हम लोग बोलते हैं ना आर्ग्यूमेंट, ट्रायल का फुल क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया। और जैसे डॉक्टर को गैस्पिन में पेशेंट आया तो समझ में आ जाता ना जाने वाला है, वैसे एडवोकेट को भी उस स्टेज पे समझ आता है। वो एडवोकेट ने मैडम को बोला कि मैडम 3 साल का सजा लगेगा, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, कि उसने देख लिया कंडीशन, बिकॉज इट वाज जस्ट बिकॉज एवरीथिंग ऑन अगेंस्ट द डॉक्टर। एंड देन शी केम टू अस, मेरे पास पेपर लेके आए, शी वाज लिटरली क्राइंग, उसको 2 साल का बच्चू था, 3 साल का सजा इज बिग सजा। आई सेड मैडम राख बना के लाया तुमने, मैं कहां से जान डालूं? And earlier if you would have come, we would have done some justice to you by doing some crosses. Lekin only on a humanity ground, I read the paper. And a beautiful point. Suddenly, we got, law के अंदर we had to play with the words. And इस केस में क्या होता कि the rapist का advocate wanted to prove that girl as a characterless. तो सजा कम हो जाएगी ना? तो उसने डिपोज किया था उसके मुंह से, मैडम का एडवोकेट ने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो रेपिस्ट के एडवोकेट ने उसके मुंह से डिपोज किया था। और उसने डिपोजिशन में क्या बोला था कि आई मेट दिस बॉय इन जून मंथ लास्ट टाइम, जुलाई आई गॉट माई मेंस्ट्रुएशन पीरियड, अगस्त वाज अ प्रेगनेंसी, सितंबर वाज अबॉर्शन। स्टोरी आपको समझ गया? Now the question was, उसका काम हो गया ना कि she met last this boy in June, मतलब if she is pregnant, then pregnant with some other boy, तो उसका तो काम हो गया कैरेक्टरलेस का। लेकिन हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट था, हमने बोला कि अब अपने को एक चांस है ये बताने के लिए कि she was not pregnant at all, क्योंकि उसकी बाकी डिपोजिशन में उसके लाइफ में कोई दूसरा लड़का आया ही नहीं है। And then we read the medical report, तो medical report was done after 14-15 days, नागपाड़ा पुलिस स्टेशन। एंड इसने बहुत ही क्लियर लिखा था कि नो कॉन्क्लूसिव सेलुलर स्ट्रक्चर चेंजेस फाउंड इन वजाइनल सेल्स, व्हिच कैन रियली इंडिकेट, हमारे लिए प्लस पॉइंट था। देन वी फर्दर रेड द पेपर, तो देयर वाज नो यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव, इट वाज जस्ट स्टेटमेंट, बट इट वाज नॉट देयर, द डिपोजिशन ऑफ दैट जनरल प्रैक्टिस हु सेड वाज नॉट देयर। एंड देन वी आर्ग्यूड इन द कोर्ट, वी सेड शी वाज नॉट प्रेग्नेंट एट ऑल। ये एडवोकेट को समझेगा कि मेडिकल की भाषा, एंड वी आर्ग्यूड and then we convinced the court कि UPT test positive, kit is not there, deposition is not there, medical examination says this is all police made case to फंसाओ और डॉक्टर that she was pregnant। आपको मालूम है चांदेवल जैसा जज, तो टफेस्ट जज, उसने कोर्ट के अंदर बोला मैडम मेरे को मालूम है तुमने किया है, लेकिन मेरे पास एविडेंस नहीं है, सो आई एम एक्विटिंग यू, एंड लड़के को 5 साल का सजा। So that is the importance of medical legal ethics. That is where our life can be saved off. If you are presented properly in any of the court, you are nowhere going to get convicted. Law is so beautiful to the law. And again for the DC, I was not able to complete the DC award. Never ever give death certificate you are not confident of cause of death. ये हेगड़े का केस खाली मैं आपको बताया था, कार्डियोलॉजिस्ट 72 years का पारसी बाबा was under treatment of this particular cardiologist. ISD का patient, known patient, everything was fine. And this Parsi Baba has adopted a girl, daughter, and she was having an affair with the driver of that bar, which Parsi has refused to have that relation because करोड़ों की property थी. So he threatened to remove her from the property. So these two people have murdered her. एंड फिर अपने डॉक्टर को फोन करके बोली कि पापा गए, उन्होंने भी बोला 72 years मोहन पेशेंट RMO को फोन किया, DC दे उनका, उसने DC दिया, डिस्पोजिंग के लिए बॉडी गई, किसी ने एनोमस कॉल किया, बॉडी को बाहर निकाला, टर्न आउट टू बी अननेचुरल डेथ। सेशन कोर्ट में केस चला, 3.5 साल का कन्विक्शन मिला डॉक्टर। MLC मैं जाते थे फास्ट में आपको 1-2 सेक्शन, never ever play with the MLC. Every accidental case must be informed to the police. Practically, मैं बहुत सारे औरतों के केसेस मेरे पास आते हैं कि एक्सीडेंट हुआ है, मंडोली हो जाती है, पैसा देने वाला आ जाता है, डॉक्टर MLC नहीं करता, 6 महीने बाद MLC होती, 6 महीने बाद पुलिस कंप्लेन होती, फिर डॉक्टर बाप कहता सर अभी क्या करूँ। आप सोच रहे हो ना, एक केस में गया था मैं, एक फिजिशियन के केस में, वाइफ ने पॉइजन खाया, स्टमक वॉश वगैरह सब किया, पेशेंट वॉज सिटेबल,
हस्बैंड आके रिक्वेस्ट किया, पैसा देने वाला हस्बैंड आके रिक्वेस्ट किया, सर चुकून झालेला आहे वगैरह वगैरह जो भी, तो आप एमएलसी मत करो। वाइफ भी, क्योंकि तब तक तो हस्बैंड ने जिंदगी में जितना प्यार नहीं दिया तो उतना दे डाला। वाईफ ने बोले नाही आता सगळं मिटलंय साहेब, सर सगळं मी चुकून खाल्ली होती, आता काही नाही करायचं। तो डॉक्टर बोला, हस्बैंड वही बोला, वाइफ बोल रही क्या पता है जान। सडनली 6 o'clock पेशेंट को एक्सीडेंट। डॉक्टर ने पीएम को तो भेज दिया, लेकिन उसके मन में एक ही डर, मैंने एमएलसी नहीं किया है। पॉइजन केस था। 7:30 बजे पुलिस का फोन आया डॉक्टर को, ये केस को समझा रहा हूँ कि मैं आपको लॉ सिखाने जा रहा हूँ, साहब जरा पुलिस स्टेशन लाया। अब उन्होंने तुरंत नेचुरली घबरा गए, उन्होंने उनके दिमाग में एक ही एमएलसी, उन्होंने तुरंत एक एडवोकेट को फोन किया। वो एडवोकेट ने बोला, मैं बोला ना एडवोकेट का नॉलेज लॉ का कुछ रहता नहीं, डॉक्टर साहब पढ़ून जा, 3 लाख रुपए पाठवून द्या, मला एंटीसिपेटरी बेल काढवायला देऊ द्या। इसको भी लगा बड़ा क्राइम है, कि उसने बोल दिया नॉन अवेलेबल ऑफिस है। 1-2 जन को पूछा होगा, टच हमको फोन किया उसने। मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ, एमएलसी कभी ऐसा कभी आपके साथ हुआ ना तो घबराना नहीं, तो बड़ा सेक्शन नहीं है। हमको फोन आया तो मैं बोला, सर बिंदास जाओ, 1 रुपया किसी को मत देना, क्योंकि पुलिस स्टेशन में जाओगे तो यू विल बी जस्ट अ विटनेस टू द गवर्नमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर केस। ये एमएलसी सेक्शन, लेकिन इसका ये मतलब कि करना नहीं, ऐसा नहीं है, यू हैव टू डू इट, क्योंकि बहुत सारे केसेस क्राइम के आते हैं जिसमें एमएलसी करवाना, मर्डर करके आया, सीआरडब्ल्यू आप कर रहे हो ना, लॉट्स ऑफ थिंग्स, बर्न फीमेल लेके आती ना, तो आप बोलते हो नहीं मालिकांना मारला ना मार खायचं, लेकिन बाद में वायलेंस एक्ट में जाता हूँ, डाइवोर्स में जाता ना। अब देखो बहुत सारे आती हैं लेडीज। तो 176 सेक्शन says if you are seeing any crime happening somewhere, where it is your duty, being a citizen of India, to inform an administrative body. If you don't do that, you are violating a law. Means MLC अगर नहीं करते हो तो violating a law, which attracts penalty of 1,000 rupees और punishment of 1 month. और जब वर्ड आता ना तो 1,000 ही आता है, 1 month नहीं आता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं एमएलसी नहीं करना, एमएलसी करो। एनीथिंग एल्स तो फीडबैक फॉर्म देना, राइट? फीडबैक फॉर्म देना, क्वेश्चन चालू रखो, मैं आपको खाली एक फीडबैक फॉर्म दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, फ्यूचर में फिर मैं अगर नांदेड़ आऊंगा तो मैं आपका फुल फ्लेज लेक्चर लूंगा, आना ही पड़ेगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर दूंगा, लेकिन टिल द टाइम मैं आपको एक फीडबैक फॉर्म दे रहा हूँ। संजय एक फॉर्म दो मुझे, क्वेश्चन चालू रखो, मैं आपके साथ पूरा टाइम होल्ड हो रही, मैं खाली ये क्यों दे रहा हूँ ध्यान से सुनो, इसके पीछे कोई मकसद है कि आई वॉन्ट दैट माई कम्युनिटी पीपल शुड नॉट सफर एनीवेयर। आई हैव डिवोटेड माई लाइफ टू माई कम्युनिटी एंड आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट द डॉक्टर येट, एंड आई हैव नॉट टेकन अ केसेस अगेंस्ट द डॉक्टर, क्योंकि जिस दिन मैं डॉक्टर के अगेंस्ट पे खड़ा हो जाऊंगा मेरे को सारे लोग बोल मालूम है, लेकिन मैं नहीं चाहता, क्योंकि कम्युनिटी इज रिस्पेक्टेड कम्युनिटी। तो एक बुलेटिन देता हूँ, ये हमारा एक फ्री बुलेटिन आपको जाएगा, इसमें सारे केसेस हम डिस्कस करते हैं और नए नए लॉज आपको बताते हैं। तो ये आपको फ्री ऑफ चार्ज आएगा, ई बुलेटिन के रूप में या हार्ड कॉपी के रूप में। खाली आपको करना क्या है, एक हार्ड एक फॉर्म है, फॉर्म फीडबैक फॉर्म, ये भर के देना है। अब ये क्यों देना है, इसके पीछे 2 रीजन है, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल आदमी हूँ, जैसा मैडम ने बोला है कि मेरा मेडिटेशन में आई डाइवर्टेड फ्रॉम मेडिकल लाइन टू लॉ लाइन एंड नाउ आई एम स्पिरिचुअल लाइन। आई टेक अ लॉट्स ऑफ लेक्चर्स ऑन स्पिरिचुअलिटी। And one second, let me complete it. So I believe in law of universe, law of universe, and law of universe says, है ना, कुदरत का कानून बोलते हैं ना, जैसे महाराष्ट्र का कानून है कि अगर आप तोड़ोगे तो सजा होगी, मानोगे तो पीस रहेगा, वैसे कुदरत भी 7 अरब लोग को संभाला ना पूरे वर्ल्ड को, तो उसके भी कानून है। एग्जाम्पल के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर से जो नीचे गिरेगा वो जमीन पे आएगा ना, यूके में हो, यूएसए में, इंडिया में, वो एप्पल गिरा था न्यूटन को जब मालूम पड़ा, उसके पहले भी था। तो आप भी बिल्डिंग से कूद जाओगे तो फ्रैक्चर होगा ना, लेकिन आपको लॉ मालूम है तो आप तोड़ते नहीं हो ना। तो वैसे कुदरत के बहुत सारे कानून हैं, उसमें एक कानून है जो बोगे हो पाओगे, तो पाप करोगे तो सजा मिलनी है, किसी को प्यार करोगे तो प्यार मिलेगा, दोगे तो मिलेगा, गाली दोगे तो गाली मिलेगा, रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा। तो दोस्तों उसी में एक कानून है कि जब तक लाइफ के साइकिल को पूरा नहीं करते हो ना,
लाइफ इनकम्प्लीट रहती है। और इसीलिए गुरु दक्षिणा का नियम निकला था कि गुरु का ज्ञान अधूरा रहता है और गुरु को दक्षिणा नहीं दी जाए। आज आपका कलीग भी हो तो मैं आपके सामने टीचर के रूप में हूं, तो ये मेरी दक्षिणा है। इसलिए हर बंदे ने भर के देना, क्योंकि इससे बाद में जो आपको फायदे होंगे ना, SMS के द्वारा, ईमेल के द्वारा, वो वैल्यूबल रहेंगे। तो ये भर के दे दो, टिल द टाइम यू कैन कंटिन्यू विद द क्वेश्चन आंसर। सर, Very good question. I'll answer once this, because I want to tell you something in that question. Beautiful question. I'll highlight that till the time you ask me the question. Remind me, ma'am, if I forgot that. Remind me that question. सर, महाराष्ट्रामध्ये अशी प्रथा आहे की डिलिव्हरीसाठी कुठल्याही मुलीला किंवा कुठल्याही बाईला तिच्या माहेरी पाठवतात. तर माहेरून जेव्हा माहेरचे लोक तिला आमच्याकडे घेऊन येतात, तेव्हा कधी कधी काही पेशंटसाठी आम्हाला इमर्जन्सी सिझेरियन वगैरे प्लॅन करावं लागतं. तेव्हा लीगल गार्डियन म्हणून आम्ही जे सोबत असतात त्यांच्यापैकी जनरली मुलीचे वडील, मुलीचा भाऊ किंवा मुलीची आई हेच लोक असतात. तर लीगल गार्डियन म्हणून आम्ही ह्यांची साईन घेतो. आणि समजा अशा केसेसमध्ये त्याने नंतर आमच्या अगेन्स्ट काही केस वगैरे केली तर आम्हाला ह्याच्यामध्ये कितपत प्रोटेक्शन मिळू शकते. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे प्रिव्हियस 2 सिझेरियन सेक्शन्स अशा केसेसमध्ये जनरली TL वगैरे करावं लागतं, किंवा प्रिव्हियस 1 सिझेरियन सेक्शन असं असेल तर TL वगैरे करावं लागतं. आम्ही ॲडवाईस करतो पेशंटला TL करायचं की नाही. समजा मुलीचे आईवडील म्हणले की TL करायचं आहे आणि 2-3 दिवसानंतर नवरा येऊन आमच्याशी भांडतो की TL का केलं, अशा केसेसमध्ये आम्ही काय करायचं? Very good question. See, answer to first question about the emergency cesarean section or XYZ. Law is very clear in this particular part that adult consent is a good consent. Adult consent is a good consent. Even if a female alone gives a consent, it is a good consent. And the relative, immediate relative with her, in added to that consent, become a very strong consent. Because in emergency, your law says that everything is marked as per Parmanand Katara's case. When it is a plan, we definitely say yes, you call husband if it is a nearby area, can reach on time. For answer to second question, in any TL case, it is never be an emergency. Plan TL and husband consent is mandatory because it is board's authority. It is board's authority to go for next generation. So unless until there is, yes, in majority of cases you can be defended by adult consent also, because even female have got the rights on her own body, and if she is adult can give a consent. But when in relation to TL, court needs complete explanation, because marriage is still sustaining, not divorced. It is a case of emergency. Previous 2 cesarean sections she underwent, she came for 3rd cesarean section. At that time, we generally advise them for. You advise that time you call a husband. If it is not possible for husband to. How come 2 LSCs came to you and your patient is under ANC with you? See, in emergency everything is marked. They don't go for TL. Just do LSCs. Later you go for TL. See, Manchanda case has very clearly said, if you have proceeded with one surgery and taken a consent for one, close it, re-give a consent, retake a consent, then proceed for second surgery. Or take a generalized consent in between call, because patient is anesthesia. In Manchanda's case, same thing has happened. When she was in anesthesia, mother consent was not a good consent. That time said she is alleged that my consent was because 2 operations was done simultaneously. Her consent was needed. In that case, TL surgery was done.
So there we are clear with that. A dead person is brought to the hospital, and when we just inform the relatives that the MS has to be done, the relatives say no, we want to take the body, we don't want to give it up. So in such case, what the law says? Good question. If you know the protocol of government hospital, if dead body is brought to them, what they do? Either they insist for PM or they say bring death certificate, we will release the body. Same applies to you. If you don't want to have a PM, you tell a patient कि भाई तुम्हारा फैमिली डॉक्टर से डीसी लेके आओ और लेके जाओ. आप समझ रहे हो ना? That what loss is. Practically कई बार पॉसिबल नहीं होता है, you know? तो उस टाइम पे अगर पेशेंट लेके चले जाए जबरदस्ती, तो लॉ ये भी बोलता है कि यू इन्फॉर्म ऑफ पुलिस. क्यों? कल को अगर मर्डर केस होगा और बाद में टर्न आउट टू मर्डर, तो उसके स्टेटमेंट आएगा ना, वो हम डॉक्टर के पास गए थे, उस वक्त क्या आंसर होगा? लेकिन अगेन practically everything is not possible. So you have to take a decision as per the case. As per the case. Registration. Some are registered in Part 1, some are registered in Part 2, some are registered in Part 3. What the law says? Registration of medical. Master. See, I have not gone to that particular deeply, registration 1 and 2, but this difference doesn't play a role with MCI or MMC, because allopathic doctor practicing in any corner get transferred or registered to state of Maharashtra are divided in different registration. But the eligibility for everyone is same because they are allowed to do allopathic practice. But other deep studies, since I have not deeply done, so sorry to comment on that, but next time when I will come, I will definitely comment on that. Any other question? Yes, tell me down, don't worry. पूछो ना सुनता हूँ. We run an ICU and we get many critical patients in our ICU. What happens? Many critical patients, they go against medical advice. Sorry, I don't. Sir, we run an ICU, Right. and we see a lot of critical patients. We see many patients, many relatives what they do when they see that patient is not improving and they are having a lot of costs. So they say that they will take the patient against medical advice to home. It happens, it is a routine procedure. Problem is not that, but after some days the relatives come to us and they tell us to give a TC. What should we do? Good question. Mercy killing is not allowed yet in India. Law says if patient is on 20 and not improving, you cannot leave a patient. If patient is dying, Dama discharge doesn't help you. In Dama discharge, you always show a transfer to the patient. From your hospital going to somewhere else. बाद में बीच में वाले घर पे लेके जाए. You will be safeguarded. And in such a case, if patient comes back for the DC, you can straightway say कि I have advised you to take the patient to some other hospital, which you refuse. So I am really sorry to give you. And you have to refuse it because tomorrow we don't know what must have transpired. I'll give examples so you'll understand. In one case, patient was sent for CT scan in ambulance to one CT scan center where during contrast probably question patient expired. Was sent back in ambulance. By the time it reaches to this hospital from which hospital was sent,
it was brought dead. And doctor has seen patient was brought dead. Again, on the influence of nurse in that hospital, because she was a relative, doctor has given a DC. Now, 3 days later, advocate have sent a notice to this hospital. Rather, they came and discussed. And he said, कि my relative said that the patient has died in CT scan center itself. So please tell us exact clarity of the same, because DC was given by this hospital. And we got the answer that the patient was badly suffering from terminal disease, that is a cancer, and relative accompanying an ambulance was a suspicious guy. And we got the little suspicious message that probably the guy has murdered the lady. Now question is that the patient died at CT scan center, or patient died at an ambulance, or patient died at hospital. Since it was already DC given, we have to handle the case and we handled properly. But in your cases, we don't know what person conspired. Terminal disease, relative may have. So if you give DC, you will draw. So my second question, that we get a lot of patients' relatives who come to take prescription. When they do not bring the patient, they say that patient is bedridden or. फॉर्म भरने के टाइम सॉरी फॉर्म भरने के टाइम खाली बता दो उस पे जो लिखा है ना डॉक्टर इज अ मेडिकल लीगल सर्विसेज व्हिच इज रनिंग इन मुंबई with the nominal charges and giving a support to the doctors, where we take every headache of a doctor, right from advocate charges, drafting charges, document charges, everything. Suppose I have a consultant.